Assalamu alaikum warahmatullah. Today I am here again with a new lesson about MX Excel shortcut keys, and in this lesson or video you will learn how to select the rows, cells and column in Excel sheet. कि आप इसमें सीखेंगे कि किस तरह आपने एक बुक में किस तरह आपने रोज और सेल्स को कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है. Normally when we select the rows and column we use mouse left button to select the different rows, column and cells. कि नॉर्मली जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट रो, सेल्स और कॉलम और द एंटायर शीट, और कंट्रोल प्लस ए की फ्रॉम द कीबोर्ड. So in this video I will teach you how to select in a different way. Shortcut key, easy and simple shortcut key. First you will have to simply press F8 key from the keyboard. After pressing F8 key, press the down arrow key to select the cells or column downward. कॉलम को आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है तो आपने F8 प्रेस करने के बाद डाउन एरो की प्रेस कर देनी है, और ऊपर की तरफ दोबारा ले जाना है तो अप एरो की. एंड इफ यू वांट टू सेलेक्ट द रो तो यू हैव टू प्रेस right arrow key from the keyboard. It will keep on selecting the row to the right side. And if you want to select the left side, use left arrow to select the upward right up arrow key. It will select the column or cells or sheet upward. So this is the simple and easy way to select the cells, rows and column in Excel sheet. Excel sheet में काम करते हो किस तरह आप आसानी के साथ जो है F8 प्रेस करने के बाद एरो कीज़ की मदद से आप डाउन राइट लेफ्ट एरो की मदद से आप अपने शीट को, सेल्स को, कॉलम को, आप रोज़ को आप सेलेक्ट करते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.